Hello, myself Dr. Ankur Nayan, your Psychiatry faculty. So coming to the video number 2 of the Rapid Revision PYQ series for FMG. In this video, we'll talking about the important points of schizophrenia. You can download the workbook from this Telegram channel. इन सिजोफ्रेनिया को दो क्वेश्चन जो आते हैं ना, बेसिकली वो सिम्टम्स पे आते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स. इन दोनों को कोई डिफरेंशिएट करना है अपने को, एंड देन इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ सिजोफ्रेनिया. Treatment part will be covered in antipsychotic part. So the symptoms divided into 3 categories: positive symptoms, negative symptoms, and disorganization symptoms. Positive, negative, and disorganization. What is in positive symptoms? Positive मतलब कुछ add कर दिया गया, add-on symptoms. Add-on symptoms. It is due to increased dopamine in mesolimbic tract. इसमें क्या है? डिल्यूजन और hallucinations. Delusion and hallucinations. Most common delusion is delusion of persecution, and most common hallucination is auditory hallucination. Auditory hallucinations. So delusion and hallucinations are positive symptoms. Second most common is hallucination is visual hallucinations. जब भी visual hallucination आएगा ना, अपने को organicity को rule out करना है. Rule out organicity. And what is important about positive symptoms that these respond well to medication. So it is a good prognostic factor. Then what about negative symptoms? Subtracted off symptoms. कुछ features जो अपने निकाल लिए हैं, just because of decreased dopamine in mesocortical tract. Positive symptom was due to increased dopamine in mesolimbic tract. ये है decreased dopamine in mesocortical tract. इसमें 6 है, बट एग्जाम में अपने को 6 में याद नहीं रहता है कि कौन सा क्या था. सो वी हैव मेड अनदर निमोनिक SPL, सिजोफ्रेनिया प्रीमियर लीग. SPL 6 से तो आप याद रखो ही, उसके अलावा आप याद रखो SPL, सिजोफ्रेनिया प्रीमियर लीग फॉर नर्व्स एंड वेंट्रिकल्स. AS से हो गया asociality, दैट इज लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन. एपैथी, लैक ऑफ कंसर्न. Elogia, decrease in verbal communication. Affective flattening, that is decreased emotional expression, emotional blunting या lack of emotional expression. Anhedonia, that is lack of pleasure in previously pleasurable activities. Evolution, that is lack of drive and motivation for goal directed activities. 6A याद रखो, और याद रखो सिजोफ्रेनिया प्रीमियर लीग. Sociality, apathy, elogia for affective flattening, anhedonia, and evolution. And what is important about negative symptoms is that it is a poor prognostic factor, bad prognostic factor, because they respond poorly to medications. So this was about positive symptom and negative symptoms. अब याद कैसे रखोगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से ट्रैक्ट में था, कैसा था? तो पॉजिटिव 30 ml 60 ml का पैक बना लो. ml is for mesolimbic, और जब अपन 30 ml 60 ml का पैक पीते हैं तो अपन को पॉजिटिव, कभी कभी अपन को पॉजिटिव लगता है, दैट इज पॉजिटिव सिम्टम. सो ml पैक mesolimbic पॉजिटिव सिम्टम्स. देन इट इज आस्क्ड कि सिजोफ्रेनिया में डोपामिन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वेदर डोपामिन इज इंक्रीज और डिक्रीज. सो डोपामिन इज इंक्रीज किसमें था? mesolimbic. ml पैक पॉजिटिव सिम्टम, and was decreased in mesocortical negative symptoms. So dopamine is both increased and decreased, and serotonin is increased. Dopamine dog था तो serotonin क्या है? शेर है. शेर जो है वो हमेशा increase होगा क्योंकि वो जंगल का राजा है, and it is responsible for both positive symptom and negative symptoms. Questions देखते हैं. January 25 में देखो क्या है क्वेश्चन आया था. Which of the following symptoms does the term affective flattening 6A में याद रखा था अपन ने, सिजोफ्रेनिया प्रीमियर लीग, एंड देन वाज फॉर अफेक्टिव फ्लैटनिंग. सो इट इज ए नेगेटिव सिम्टम. इट इज नॉट अफेक्टिव सिम्टम, नहीं होता. अफेक्टिव सिम्टम मतलब क्या होता है? मूड सिम्टम्स. पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूजन हैलुसिनेशन, और नेगेटिव सिम्टम में 6A जिसमें था अफेक्टिव फ्लैटनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन was in January 23. A 25-year-old patient presented with a complaint that aliens are communicating with him by sending electromagnetic radiation to his brain and asking him to
kill his relatives. So these are the positive symptoms, and he has been suffering from this disorder for last 20 years. The patient does not work on farm and has stopped participating in any social functions. So first part क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स है जिसमें डिल्यूजन और हेसिटेशंस है, और सेकंड पार्ट जो है वो नेगेटिव सिम्टम है. पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, the answer will be schizophrenia. So with this question we come to the diagnostic criteria. Diagnostic criteria क्या है, 2 or more होना चाहिए, 2 or more. क्या क्या, delusion, hallucination, that is positive symptom, disorganized speech, disorganized behavior or catatonic behavior, and negative symptoms. This way in the question, positive symptom, negative symptom, and this should be present for more than 6 months as per DSM-5 TR to diagnose at schizophrenia, and more than 1 month as per ICD-11 and ICD-10 to diagnose as schizophrenia. और less than 1 month होगा तो क्या होगा, DSM-5 के हिसाब से उसको बोलेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, एंड ICD-10 ICD-11 के हिसाब से उसको बोलेंगे ATPD. बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि ICD-10 ICD-11 है तो अपन मोर देन 1 मंथ में सिजोफ्रेनिया बोलेंगे, और DSM-5 है 5 के आगे क्या होगा, 6, तो सिजोफ्रेनिया. फ्यू पॉइंट्स अबाउट द ब्यूलर 4A. वहां निगेटिव सिम्टम्स में 6A था, ब्यूलर में 4A है. इसमें भी अपन कंफ्यूज हो जाएंगे. अपन ए नाम से बहुत सारी गर्लफ्रेंड, आस्था, आराधना, अनामिका, बहुत सारी गर्लफ्रेंड. अब एग्जाम में कौन सी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ दिया अपने को याद नहीं आ रहा है, तो अपन ने क्या किया, निमोनिक को चेंज किया थोड़ा. USMF, then we can decode it as autism, that is autistic thinking and behavior. Association disturbances, जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, लॉस ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. एम्बिवेलेंसी, दैट इज इंडेसिसिवनेस एंड अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस, जो क्वेश्चंस में भी अपने को पूछा था, दैट इज डिक्रीज इमोशनल एक्सप्रेशन और इमोशनल बंटिंग. 4A ब्यूलर. देन next mnemonic is USMF, autism, association disturbances, ambivalency and affective disturbances. So with this we conclude the rapid revision of schizophrenia, and I have included the questions, the important points. आप इसको ही पढ़ो और इससे एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू. Meet you in the next video series on delusion disorder.